लेकिन चलिए दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स हैं। बातचीत की शुरुआत मुथूट कैपिटल सर्विसेज के सीईओ मिस्टर आर मनोमोहनन, ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, मैं इतना तो जानता हूं मुथूट कैपिटल सर्विसेज एक एनबीएफसी है, व्हीकल फाइनेंसिंग का मुख्य तौर पे कामकाज है। तो अगर आप आसान शब्दों में, इजी टर्म्स में समझा सकें, मुथूट कैपिटल सर्विसेज करती क्या है? व्हाट्स द बिजनेस मॉडल, सर? Good afternoon. Nice to be with you. As you mentioned, we are into financing of two-wheelers. And over the years, we have been steadily growing our AUM. Our AUM was 690 crores rupees in March 2014, which went up to 840 crores by March 2015, and further to rupees 1,039 crores by last March, that was March 2016. Okay. अच्छा, तो प्योरली व्हीकल फाइनेंसिंग में मुथूट कैपिटल सर्विसेज सर, और एक हर तरह की व्हीकल्स होती हैं क्या? पैसेंजर, टू व्हीलर, सबको फाइनेंस करते हैं आप? Mainly two-wheelers. We are mainly into two-wheelers. Out of about 928 crores disbursement last year, 780 crores was for two-wheelers. We are mainly into two-wheeler financing. Acha, I was reading about your company. It said, one of the articles said you've crossed 100 crore rupees loan book. But that was on the back of aggressive two-wheeler financing, as well as there is corporate lending. What's that segment, sir? वो कितना बड़ा chunk आपके revenues में, आपके financials में contribute करता है? Yeah, I was mentioning it was not 100 crores, it was 1,000 crores. Last March, we crossed 1,000 crores loan book size. We closed with 1,039 crores. And last year, as I just mentioned, the total disbursement was 928 crores of rupees, out of which 780 crores was for two-wheelers, and about 148 crores was for other loans. These are corporate loans, but these are primarily for non-banking finance companies who are actively involved in retail financing. Our focus remains retail lending. Oh, okay. अच्छा, एक बात बताएं क्विकली सर, अप फ्रंट मनमोहन साहब, ये जो मुथूट कैपिटल सर्विसेज है और ये मुथूट फाइनेंस एक और लिस्टेड कंपनी है, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कोई ओवरलैप्स नहीं है, बिल्कुल अलग कंपनी है ये उससे? These are totally different. These belong to they belong to the same family, but these two companies belong to two different groups. These two groups do not have anything in interconnected dealings or anything like that. Okay, तो अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा था मनमोहन साहब से कि एक मुथूट कैपिटल सर्विसेज, एक मुथूट फाइनेंस, दो लिस्टेड कंपनीज है। मुथूट फाइनेंस, वो जो गोल्ड लोन के नाम से हम अच्छे खासा जानते हैं उस कंपनी को, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, लेकिन कोई ओवरलैप्स नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग कारोबार है। अच्छा, जहां तक मुथूट कैपिटल सर्विसेज की सर बात है, मैं पढ़ रहा था बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन सदर्न रीजन में है। क्या पूरी तरह से आप वहीं पे फोकस्ड हैं, वहीं से पूरा बिजनेस आता है आपका? Correct. We started the business in Kerala. We expanded to the other states in the south. Even now, our main business is coming from the southern states. But from last year, we started expanding to the north also. In fact, we have already set up a focal point office set up in Delhi. From there, we are trying to finance. We are trying to expand our operations to 7 states in the north already. We already got about 200 employees on our rolls, located in 7 states in north and east. So this year, our focus will be, from this year onwards, the focus will be on geographical expansion also into the north. Oh, okay, Mr. Manomohanan, do stay with me. I just need to make my viewers understand what we have chatted till now. अच्छा, मैं सर से कामकाज समझ रहा था मुथूट कैपिटल सर्विसेज के बारे में। ये कंपनी एक एनबीएफसी है जो कि खास तौर पे सदर्न रीजन केरला बेस्ड है, और वहीं से इसने कामकाज की शुरुआत करी। तो इस समय मेजॉरिटी रेवेन्यूज इसके केरला या सदर्न इंडिया से आते हैं। अब ये कंपनी नॉर्थ इंडिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। क्या करती है कंपनी? प्राइमरली व्हीकल फाइनेंसिंग, और उसमें भी टू व्हीलर फाइनेंसिंग इस कंपनी का मुख्य कामकाज है। इस कंपनी की जो मैं एक्चुअली आंकड़े देख रहा था, ऑलमोस्ट 87% ब्रांचेस जो इस समय सदर्न इंडिया के स्टेट, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु हो, वहां पे कंसंट्रेटेड है। लेकिन अब मैनेजमेंट या अब कंपनी बाकी जगह पैर जमाने की लगातार कोशिश कर रही है। जहां तक एक और लिस्टेड कंपनी है मुथूट कैपिटल और मुथूट फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है, दो एक फैमिली को बिलोंग करती हैं, लेकिन दोनों का कोई इंटर ओवरलैप नहीं है, दोनों बिल्कुल सेग्रीगेटेड, दोनों अलग बिल्कुल कामकाज है। अच्छा, मिस्टर Manomohanan, I was looking at your financials, Q4 numbers. The numbers are steady. आय में 27% जंप, मुनाफे में 11% का उछाल,
But the issue is asset quality. Though it has improved sequentially, Q on Q, but still you're sitting at gross NPA of over 5%, net NPAs of over 4%, sir. Yes, yes. Actually, there has been a spike in our NPAs in the last 2 years, let me say. And we have already taken steps to address that. And we have also to consider that from last year onwards, RBI has implemented the new NPA recognition norm, new asset recognition norm. True. So the NPA recognition has to be brought to 90 days overdue from 180 days overdue. So last year, it was reduced from 180 days to 150 days. There has been an addition of a substantial addition of NPAs on account of this one particular aspect alone. But we have already taken steps to redress that. It is a fact that our NPAs as on the last financial year end was in excess of 5%. But we are confident that we'll be able to bring it down to around 4% by the end of this financial year. And what gives you that confidence, sir? अच्छा एक बात बताएं, ये जो आपने कहा पूरे एनपीए ज्यादातर आरबीआई के रिकग्निशन चेंज होने के कारण एनपीएस हुए, या फिर क्योंकि आप, मेरी धारणा ये है, एजम्पशन ये है कि आप टू व्हीलर फाइनेंसिंग में हैं, टू व्हीलर फाइनेंसिंग ज्यादातर रूरल इंडिया में होती है, और अगर ऐसा है तो डिस्ट्रेस होगा, 2 साल 2.5 साल से हमने कम बारिश, लोअर इनसफिशिएंट रेनफॉल्स देखी हैं, क्या उसका इंपैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है एनपीएस पे, वो भी दबाव बना रहा है? There has been an impact of these economic situations also. That is why I told 2 years. I mean, in fact, the NPA revised recognition norms came into effect only this last year, that is 2015-16. But by 2014-15 itself, our asset quality got slightly impacted due to the economic situation. I was telling, in addition to that, there was this revised norms on account of the asset recognition. अच्छा, और maximum NPAs are out of the Tamil Nadu portfolio. Any specific reason for that, sir? Tamil Nadu, we found that the repayment culture has been impacted. There are many reasons for that. We are analyzing that, but we have already taken steps and we have reversed that trend this financial year. That increase in NPA in Tamil Nadu has been arrested. We have taken many steps there to address that situation, and it is under control now. Achha, you know, you've crossed loan disbursement of 1,000 crore rupees in this financial year. I was hearing there's a target to reach 1,500 crore rupees. How come you're going to achieve that, sir? And there's some specific schemes that you come out with. Ladies only two-wheeler financing, students, some student schemes. What's going on? What's these new schemes all about? And how is that the way to achieve that 1,500 crore rupees loan disbursement target? First of all, we did a disbursement of 928 crores last year, which was against 648 crores in the previous year. This was a growth of 43% in disbursement. If we maintain, we are confident that we will be able to maintain that growth rate this year also. And if we are able to maintain that growth, a similar increase in the AUM is also possible. That is why we are confident of crossing these figures that you mentioned. But as you rightly mentioned, we have also got, there are 3 ways in our company. We recognize 3 strategies for improving the business. One is intensifying the efforts in the areas where we are already established, that is the southern states. And in our company, in our type of business, the loan origination takes place in the dealer point. We are already present in about 2,500 dealer points. We are trying to increase the dealer point coverage to 2,800 in the south and west. In addition, there is expansion to the northern states. I told you, geographical expansion. And innovative products is very much a part of our strategy for improving the business. The latest only scheme which was implemented by us has been hugely popular. You are aware that the scooter sales has been increasing as a percentage of the total two-wheeler sales in India. It has gone up already from 20% to 30% last 5 years, and is expected to reach about 40% by 2020. And we have taken advantage of this increased sales in scooters along with the ease of handling gearless scooters. So Mr. Manomohanan, so the outlook for the company looks rosy and you're confident about it, right? Yes, very much. On that note, sir, thanks a ton for joining us. ये थे मुथूट कैपिटल सर्विसेज के सीईओ साहब. जो एनपीएस है उसमें आरबीआई के नॉर्म्स में जो बदलाव हुआ था उसके चलते भी एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई थी. ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस में उछाल था.
मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट के आगे चलते एनपीएस को 4% या उसके नीचे लाते हुए नजर आएंगे। इस कंपनी ने कई नई स्कीम्स लॉन्च करी हैं। 1000 करोड़ रुपए का एयूएम लोन डिसबर्समेंट का आंकड़ा इसने आसपास उसके क्रॉस करा था FY16 में। मैनेजमेंट का टारगेट है 1500 करोड़ रुपए ले जाने का इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। उसके चलते कुछ नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, जहां पे लेडीज ओनली टू व्हीलर फाइनेंसिंग की, स्टूडेंट्स ओनली टू व्हीलर फाइनेंसिंग की, ये तमाम स्कीम से चलते चलते मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि शायद लोन डिसबर्समेंट में 50% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये स्टॉक्स बड़े तगड़े उछाल में, वैसे ध्यान रखें इस स्टॉक की भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक साल में 60% और पिछले 4 महीने में मैं देख रहा था 130 रुपए का स्टॉक 226 रुपए पे कामकाज करता हुआ, यानी कि बीते 4 महीनों में 75% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। और तमाम एनबीएफसी कंपनीज में इसी तरह की रेटिंग देख रहे हैं। अगर आप किसी भी एनबीएफसी का स्टॉक उठाएंगे सिमिलर मोमेंटम है, क्योंकि मॉनसून अच्छा हुआ तो शायद प्रोस्पेक्ट्स इन तमाम कंपनीज के इंप्रूव होंगे। हालांकि ये डिबेटेबल है कि ये फाइनेंशियल्स में जो इंप्रूवमेंट है स्टॉक प्राइस कितना ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, क्योंकि तगड़ा उछाल है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। 11% मजबूती के साथ दिन के हाइस के आसपास कामकाज। छोटा सा ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग कंपनी पराग मिल्क फूड्स, और इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर भरत केडिया से बात